देखो मैंने मसला दिया नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज संडे का दिन, छुट्टी है, तो देखिए आज मैं क्या क्या बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे एक इधर पे मेरा चिकन पक रहा है, इधर पे मैं फिश का सिर अच्छा गोटाऊ को बनाने जा रही हूँ। होपफुली आप सब ठीक होंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं पूरा पसीने से लथपथ हूँ किचन में। वैसे मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है। ये हो गया मेरा थोड़ा सा पाँचफोरन। अभी मैं पहले चिकन बनाऊंगी। तो ये जो मसाले मैंने प्रिपेयर किए थे, लहसुन, मिर्ची, प्याज, इसी का पेस्ट में डालने जा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर, और थोड़ा सा मीट। ये हल्दी, नमक, ये है मीट मसाला, थोड़ा इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। भुने हुए आलू, थोड़ी देर इसे पकने दीजिए अच्छे से।
अब मुझे ये करती हूँ फिश
बस कुछ देर और, थोड़ी देर में ये हो जाएगा। आज हाम्रो सन्डे स्पेसल छ माछा मासु दुइटै छ आज। माछा मासु एकदमै राम्रो, मेरो मिसेसले राम्रो मिठो बनाएको छ, एकदम मिठो है। यो माछा हो, माछाको क्वालिटी पनि राम्रो छ है। यो मासु हो प्लस रोटी पनि छ। म चाहिँ रोटी र भात खाँदैछु। एकदम दामी बनाएको छ, टेस्टी टेस्टी छ। लु हामीले चाहिँ अब सुरु गर्नु पर्यो। रेसिपीहरू त सबै देखिहाल्नु भयो हजुरहरूले। ननभेज खानेहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ, स्किप गरिदिनु होला ननभेज नखानेले। हजुरहरूलाई मेरो फर्स्ट बाइट। रोटी खानुभयो तपाईँले? नानी लिएर आइहाल्नु। आइज ल। लु मेरो छोरी पनि हामीसँग बस्ने अरे। त्यही भएर आजको भिडियो यति नै राख्नु पर्ला, किनभने मेरो नानीहरू भिडियोमा आउनु पाउँदैन, मान्दैन हो। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, के लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु नबिर्सिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। डु सब्सक्राइब। दामी है।